So Biot-Savart law is the first law that you are going to study, and most of the problems has to be dealt with using Biot-Savart law in this chapter of magnetics. Okay, so there are two things. One is magnetics, another is magnetism. So magnetism is you talk of classical magnetism, जैसे north pole south pole उनका interaction, magnetic field on the axis of the dipole, वो सब जो cases आते हैं वो magnetism में. Magnetics is to find the interaction of a current carrying or a moving charge on other moving charges or current carrying wire. ठीक है, उस इंट्रैक्शन को कितना टॉर्क लगेगा, कितना फोर्स लगेगा. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बिकॉज ऑफ मूविंग चार्ज, बिकॉज ऑफ अ करंट, ये सब मैग्नेटिक्स में आता है. मैग्नेटिक्स इज मोस्टली it's mainly for the interaction of a moving charge with the magnetic field. Okay. अब देखिए ये आपका क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है, उसके अंदर आपने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ है dl. द डायरेक्शन ऑफ dl इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो. इज दैट क्लियर? Now because of this straight elemental current element at a position p, which has a position vector r, which makes an angle theta with the current element dl, you can find out the magnetic field using Biot-Savart law. So Biot-Savart law is basically, जैसे Coulomb's law is meant for a point charge, it is not meant for extended bodies. We can use it to find electric field or force due to extended bodies as well, but we make use of that fundamental law, which is Coulomb's law. Similarly, every current distribution, any kind of current that is flowing in current carrying wire of any shape, a square loop or rectangular loop or circular loop or ellipsoidal loop or any shape, you can find the magnetic field at any point using this fundamental law, which is Biot-Savart law. Again, I am repeating Biot-Savart law. For that, you need to consider a current element dl. The direction of current element has to be in the direction of the flow of current at a position vector r from that current element, which makes an angle theta. You can find out magnetic field dB. B is the symbol generally that we use for magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैपिटल E होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैपिटल B है. Now this current carrying element or current element, ठीक है, it's very infinitely small element. तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, that is also elemental magnetic field. That is this dB is only for the current element, not for the entire wire. For every wire, you have to find out the magnetic field and then integrate it. Okay. So the expression is, don't look at the middle expression now. Look at the last expression. That is dB is equal to mu naught upon 4 pi. Okay, mu naught upon 4 pi I dl cross r upon r cube. So this is analogous to electric field due to a point charge. This is magnetic field, elemental magnetic field. This is mu naught upon 4 pi, which is analogous to 1 upon 4 pi epsilon naught in electrostatics. This I dl, okay, is analogous to charge q, and this is just to indicate the direction. When you take cross product of dl with r, okay, you can also write this as mu naught upon 4 pi I dl cross r cap, ठीक है, and the denominator will become r squared. So it is inversely proportional to the distance from the current element r. Mu naught upon 4 pi I dl cross r. I is the current in the wire. I is the current in the wire. Okay, rate of flow of charge. I is the current in the wire.
I times dl cross r. So dl cross r will give you the direction. तो dl r का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो it will be in a direction which is perpendicular to the what? It is the direction of magnetic field will be perpendicular to the plane containing the two vectors, and you can use right hand thumb rule to find the direction. So what you have to do is take your right hand, point your fingers in the direction of dl element, that is the first vector. Curl your fingers of the right hand in the direction of the second vector, which is r. So dl cross r. So at point P, you will get the thumb will be into the plane. That is why there is a sign of cross. ये समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख लो. The term in the middle, 1 upon 4 pi epsilon naught c square. That is, हाँ बोलो बेटा. एक्चुअली राइट हैंड थंब रूल समझ में नहीं आ रहा कैसे. इज इट पॉसिबल यू कुड स्टार्ट योर कैमरा एंड शो अस? Okay, just see. आप सबको दिख रहा है अभी? यस. ठीक है, जस्ट बोलो. देखो, ये जो फर्स्ट वेक्टर है ना, फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में राइट हैंड है. ठीक है, दिस इज माय राइट हैंड. यू कैन यूज योर राइट हैंड. डोंट वेट फॉर माय राइट हैंड टू कम टू योर हैंड. तो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को लेके जाओ. ठीक है, दिस इज डीएल. देन आर इस डायरेक्शन में लेटर से, तो आर की डायरेक्शन में उसको कर्ल करो. तो दिस थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी. अनदर वे दिख रहा है आपको कि नहीं? हाँ सर, देख रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स से दिस इज द राइट हैंड. टेक fingers of the right hand in the direction of first vector, curl them in the direction of the second vector. Thumb will give you the direction of magnetic field. अगर ऐसे है, curl them तो नीचे आएगा. Now clear? यस सर, क्लियर. This is simple vector cross product. This mu naught is known as magnetic permeability. Okay,
Epsilon naught was known as electrical permittivity. This is known as permeability, magnetic permeability. So these two are analogous terms. वैक्यूम में सबसे ज़्यादा strong magnetic field होगी. If you keep some other paramagnetic substance in between this elemental wire, this elemental current and point P, then that magnetic field will reduce by some vector. In the expression of 1 upon 4 pi epsilon naught c square, c is the speed of light. So in the chapter electromagnetic waves, we will find out the relationship that, and you will come to know that speed of light is given by under root of 1 upon mu naught epsilon naught. So from this you can write mu naught as 1 upon epsilon naught c square. So that is why this term and this term, they are one and the same. Just go along. Okay, now there is a question from HC Verma. Try that. The value of 4 pi mu naught upon 4 pi is given by 10 to the power minus 7 Tesla. T is stand for Tesla. The magnetic field is given by the unit, SI unit of magnetic field is Tesla. So the value of mu naught is given by 4 pi Tesla meter per ampere.
So point P is in a horizontal plane. Okay, so north, south, east, west, it's a horizontal plane, and what you are looking at it is top view of a horizontal plane. Current is flowing from south to north. Is it clear? And how much is the current? Current is 10 ampere. Okay, find the magnetic field due to a 1 centimeter piece of wire. So this length of wire is 1 centimeter. So your DL is 1 centimeter. Okay? So actually it is not DL, it is delta L. But in terms of the distance, R, it is quite a small distance because distance is 200 centimeter or 2 meter. Okay, so your current element is 1 by 100. Is it clear? Now exactly at 45 degrees to the east of north or north of east. Northeast means exactly midway. That means this angle is 45 degrees. So theta is 45 degrees in this case. You wish to find out the magnetic field. So you can use the right hand. How to use right hand? DL के डायरेक्शन में फिंगर्स को लेके जाओ. DL के डायरेक्शन में फिंगर्स को लेके जाओ पहले राइट हैंड की. फिर उसको आर की डायरेक्शन में कर्ल कर दो. तो थंब तुम्हारा कहाँ पे आएगा? इनटू द प्लेन. दैट मींस इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रॉस. अंडरस्टूड? Now you have to apply Biot-Savart law. What is the Biot-Savart law? Mu naught upon 4 pi. Okay, we are only direction we have already calculated. So we are now just calculating the magnitude. So B will be given by mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. I dl sin theta upon r square. Right? So mu naught upon 4 pi, what is the magnitude? 10 to the power minus 7. Okay, 4 pi कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 7 आएगा. म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू. आई इज 10 एम्पियर, डी एल इज 1 सेंटीमीटर, साइन थीटा इज 1 by root 2 upon r square. What is r square? 4. So now you just need to calculate this value. कितना आएगा ये? Root 2 by 8 into 10 to the power minus 8. Or you can write that as root 2 by 8 can be written as 14 point. क्या होता है रूट 2 की वैल्यू? ये होती है ना 14. 1.44. हाँ, into 10 to the power minus 9 कर दिया divided by 8. Now you can solve for this. ये सबको समझ में आ गया?
Okay. Now let's come to the application of Biot-Savart law. Okay, so let's say we wish to find out magnetic field due to a finitely long wire carrying current I. That wire is straight wire. ठीक है, इट्स अ फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर. तो अब इसमें हम क्या करेंगे? देखिए, let's say current is going from down to up as shown in the diagram. Okay, so at a point P you wish to find out the magnetic field, right? So you will take small elements and find magnetic field by applying Biot-Savart law at point P due to every current element. Then you will take proper components if required and then integrate them. Is it clear? तो अभी हमने क्या किया, एक हमने ये वायर लिया, इस वायर में दिस इज द एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट, ये वाला, ठीक है, विच इज एट ए डिस्टेंस एक्स. ये डिस्टेंस क्या है? एक्स है. और इससे एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स लेंथ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया. बिकॉज ऑफ दिस वायर वी विश टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी. ठीक है ना? तो पॉइंट पी पे अगर तुम देखोगे, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, दैट करंट एलिमेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉइंट पी, एट पॉइंट पी विद द परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर के साथ में ये एंगल थीटा बना रहा है. ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 minus theta, because this is 90. So if that is the case, then this angle will be 90 plus theta between the current element. क्योंकि तुम्हारा जो करंट एलिमेंट है वो देखो किधर, ऐसे है. दिस इज योर करंट एलिमेंट. जैसे ना, ये आपका करंट एलिमेंट है, इसकी लेंथ डी एक्स है. ठीक है ना? तो इसका और इसके बीच में एंगल कितना होगा? 90 plus theta. Is it clear? Now you will apply Biot-Savart law. First find out the direction. So take the fingers in the direction of current element dl, then curl them in the direction of the second vector, that is position vector. Okay, the thumb will give you the direction of magnetic field. Okay, so that is being shown here as cross. So magnetic field due to this current element will be into the plane at point P. Okay, now you will apply Biot-Savart law. So you will write dB is equal to mu naught upon 4 pi I. dl will be written as dx. Sin theta will be written as sin 90 plus theta. And what is the distance of the current element with point P? H. H is the hypotenuse of this triangle, right? So this is X, this is R, and this is H.
ठीक है, तो ये तुमने लिख लिया. नाउ व्हाट इज relation between x, h and theta? You need to replace because r is constant, h is a variable, x is a variable. As you increase theta, as you move from one point to another point, you will have different values of theta. ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है ना? तो मैं जैसे ऐसे देखो एंगल थीटा चेंज करूंगा, जैसे जैसे dx की पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे मेरा एंगल भी चेंज होता है. यहाँ पे मेरा एंगल कितना है, 0 था, और ये एंगल अब बढ़ता जा रहा है. मैक्सिमम जो दूसरा एंड है वहां तक ये प्लस बीटा होगा, और इस एंड पे वो माइनस अल्फा होगा. तो वन ऑफ द एंगल इज ऑन द अदर साइड ऑफ द परपेंडिकुलर. So we are measuring the angle theta with respect to this perpendicular. So clockwise is taken as positive, so anti-clockwise will be taken as negative. Is it clear? Now let's find the relationship between x, h, r and theta. R is constant. So x by r is tan theta. So x is r tan theta, and dx is r sec square theta d theta, right? Similarly, h, that is the hypotenuse, will be written as r sec theta. Substitute these values here. dx की वैल्यू हो गई r sec square theta d theta. Sin theta 90 plus theta can be written as cos theta, and h square in the denominator can be written as r square sec square theta. So when you solve for this, now you are left with mu naught I upon 4 pi r cos theta d theta. Now every current element on this straight piece of wire has its magnetic field into the plane as shown. At point P, magnetic field for every current element will be cross. It will be into the plane. Okay? For every element, you can apply dl cross r to find the direction, right? So that means magnetic field due to every element is in the same direction. That means total magnetic field can just be integrated by integrating the elemental magnetic field of every current element. तो यहाँ पे खूब सारे करंट एलिमेंट हैं. समझ में आ रही है बात? ये नहीं. तो ये करंट एलिमेंट एक इधर पे भी है, ठीक है ना? यही करंट एलिमेंट इधर भी है. तो करंट एलिमेंट, जितने भी करंट एलिमेंट लोग हैं फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, दिख रहा है आपको? ये सारे करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन है डीएल क्रॉस आर है वो इनटू द प्लेन ही आने वाला है, राइट? So just you need to integrate the magnetic field. There is no need for you to take component. So cos theta d theta integral with proper limits of minus alpha to plus beta. So when you do that, you will get the result as mu naught I upon 4 pi r sin alpha plus sin beta. Okay, take this derivation.
तो स्क्रॉल डाउन कर दो ना। सॉल्व हो गया। ओके, अब इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, और वेरिएशंस देख सकते हैं. दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर अ फाइनाइटली लॉन्ग straight conducting wire carrying current I. Okay, now let's say you have this point P such that the two ends A and B, they are on the same side of the perpendicular drop. तो यहाँ पे आपने perpendicular drop किया on a line extended from A to B, so current is flowing from A to B only. But if you drop a perpendicular on the line AB, it will be on a extended line. So both ends A and B, they are on the same side. That means they make an angle clockwise, alpha and beta, beta being more than alpha. So in that case, what will happen is everything will remain same. Only thing is, while substituting the limits in the integral, you will take plus alpha and plus beta. So finally your result will be sine beta minus sine alpha. So magnitude is given by mu naught I upon 4 pi r sine beta minus sine alpha. In this special case, direction can be found out by using right hand thumb rule. ये बात समझ में आई क्या बोला मैंने? किसी को डाउट है कुछ? सर एक बार वापस बोलो। देखो, तुम्हारा जो करंट कैरिंग वायर है वो ए बी है, तो करंट इज ओनली फ्लोइंग इन दिस सेक्शन. लेट्स से दिस करंट इज आई. You wish to find out magnetic field due to this finite element at a point which is not exactly somewhere in between A and B. एक A और B के साइड में नहीं है, वो थोड़ा सा नीचे है, वो थोड़ा ऊपर है. तो ये P पॉइंट है. इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है फॉर द वायर बिटवीन पॉइंट्स A and B. This is your perpendicular. If you drop a perpendicular from point P on the line AB, you have to draw it on the extended line. इस परपेंडिकुलर से एंड ए और एंड बी का एंगल अल्फा और बीटा है. So both these angles are in the clockwise sense. So when you calculate the integral using the Biot-Savart law, जो भी अभी हमने किया था, only difference will come in this expression. You getting my point? Only Yes, sir. difference will come in this expression. ओके फाइनली चेंज क्या आएगा निकाल सकते हो ना? हाँ बोलो बोलो बेटा.
ऊपर बताया था कि वो 90 प्लस थीटा जो एंगल था उसका आप क्या बताना चाह रहे हैं, वो समझ नहीं आया। बाइट सेवर्ट लॉ के लिए तुमको एंगल पता होना चाहिए ना, हाँ सर, किसके बीच में? डीएल और डी आर के बीच में। तो डीएल वेक्टर, एक सेकेंड है मैं तुमको समझाता हूँ, रुको। पहले मैं इसको कॉपी करके इधर जाऊँ। देखो, तो जो डेरिवेशन हमने पहले किया था वो तो वही करना है। ओनली थिंग इज नाउ यू विल राइट प्लस अल्फा से प्लस बीटा। सर समझ गया मैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ गया। ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो फाइनली आंसर में कितना आएगा यहाँ पे? तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, दैट विल बी योर आंसर। अब देखो, मे बी कौन, अनिरुद्ध पूछ रहा था, किसको डाउट था? अनिरुद्ध, तुम्हें डाउट था? नहीं सर, मैंने नहीं पूछा। तो कौन पूछ रहा था अभी? सब सर स्टार्टिंग में मैंने पूछा। जो एंगल है ना, देखो, वो डीएल और पोजीशन वेक्टर के बीच में होना चाहिए। तो तुम्हारा डीएल वेक्टर यहाँ पे है और पोजीशन वेक्टर इधर है, तो ये एंगल 90 प्लस थीटा होगा ना, बिकॉज थीटा वी हैव टेकन दिस एंगल एज वी हैव टेकन एज थीटा। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर तुम डीएल और पोजीशन वेक्टर का एंगल देखोगे तो वो 90 प्लस थीटा आएगा। आई बात समझ में कि नहीं? आई। तुम बाइट सेवर्ट लॉ ही अप्लाई कर रहे हैं, बट just simply don't take sin theta. Any theta will not be sin theta. You have to find that theta which is between the current element dl and position vector r. ये समझ में आ गया? ये वाला केस भी सबको लिख लिया? हो गया सर। ठीक है ना? For an infinitely long wire, next case is that of an infinitely long wire. What will be your alpha and beta? ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा? देखो,
ये जो एंगल है, अगर इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर होगा तो कहाँ तक जाएगा ये एंगल बढ़ते बढ़ते? ठीक है, यहाँ पे ये एंगल 0 है अभी, ये एंगल अब -30 -60 ऐसे करते करते इंफिनिटी तक जाएगा, तो ये एंगल ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा ना, 90 डिग्री हो जाएगा। तो -90 से +90 तक वेरी करेगा एंगल, समझ में आया? -π/2 से +π/2 तक। So alpha and beta both are 90 and 90, which is 2. Sin 90 plus sin 90 is 2. So your final magnetic field will be given by mu naught I by 2 pi r. So how do we find out the direction of magnetic field for a current carrying wire? Now we can make use of right hand thumb rule. Okay, so don't confuse with the right hand thumb rule for the cross product. This is specifically stated right hand thumb rule for a straight infinity long current carrying wire. So what is the rule? Take your right hand, thumb should point in the direction of current carrying wire as seen here. So current is going up, so thumb is also pointing up. Now curl your fingers. So the sense in which they will turn. Okay, so you can see this arrow. The sense in which they turn will be the sense in which magnetic field will be there. So magnetic field will form closed loops. You can see here the turning, if you see from top, for this circle will be what? Anti-clockwise. If you see from the bottom, it will be clockwise, right? The distance is same. In this case, the distance is a. The magnetic field magnitude will be same, only direction will be different. The magnitude of magnetic field is same at all points. It is tangential. This magnetic field will be given by mu naught I upon 2 pi a. Magnitude is same, only direction is different. So magnetic field lines, they will form closed concentric loops.
ठीक है, so you can see here for this right hand thumb rule at point P. Okay, the magnetic field lines, they are forming this kind of circular loop, right? The magnetic field lines will come out of the plane, and here it will go into the plane. Therefore, the directions are shown as dot and cross. Okay, your fingers at point P will be pointing towards you out of the screen. Okay, just visualize or do it yourself. करंट अगर ऊपर जा रहा है थंब के डायरेक्शन में करंट को पॉइंट किया, then you curl your fingers of the right hand, so fingers will be pointing towards you, that means dot. At point Q it will be going away from you, so that is why there is a cross. ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर तुम यहाँ से देख रहे हो, लेट्स से यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर इन दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये फिंगर का जो रोटेशन है, देखोगे तो फिंगर तुम्हारी तरफ पॉइंट कर रही होंगी, और यहाँ पे देखोगे तो फिंगर विल बी गोइंग अवे फ्रॉम यू, इसलिए ये डॉट है और ये क्रॉस है. Right, so you can use right hand thumb rule to find the direction. Okay, now we can also extend this general formula for semi-infinitely long wire. That means your point P is at one of the ends, so the other end of the wire is at infinity. Okay, so one angle you will take it as 0, the other angle you will take it as 90 degree. So when you substitute the values, you will get mu naught I upon 4 pi r, which is exactly half of the infinitely long wire. ठीक है, अब सेमी इनफिनिटी लॉन्ग में द पॉइंट P need not be exactly at the one of the ends, it could be somewhere else also. ठीक है, तो उस केस में लेट्स से फॉर दिस एग्जांपल this point P makes an angle 30 degree at for one end, the other end infinity, that will make an angle 90 degree. The direction can be obtained by using right hand thumb rule. Okay,
So this is just for an example. तो सेमी इनफाइनेटली लॉन्ग में भी अलग अलग सिचुएशंस आ सकती हैं. इनफाइनेटली लॉन्ग में भी अलग अलग सिचुएशंस आ सकती हैं. लिख लिया सबने? और ये फाइनाइटली लॉन्ग है. That means the two ends make angle alpha and beta on the same side. That is 30 and 60 degree, let's say. So beta is to be taken as 60 and alpha is to be taken as minus 30, because you want to apply this general formula. Because one of the angles should be on the other side of the perpendicular. But in this case, both the angles are on the same side. So if beta is taken as plus 60, then alpha should have been on the other side of the perpendicular, but it is on the same side, so you will take alpha as minus 30. So you just need to remember this formula, sine beta plus sine alpha. Beta should be on the one side of the perpendicular, alpha should be on the other side. If alpha is on the same side as that of beta, then you have to take alpha as negative. ये बात समझ में आई? Okay. Now let's apply magnetic field due to a current carrying circular wire or loop. So you have a current carrying loop. How is it possible to have a loop which carries current? So physically what you can do is you can have this kind of structure where one of the wires brings the current into the loop, then other wire leaves like that, and these wires are quite thin. It forms a circular loop. Okay, the wires coming that is bringing in and taking out the current, they are in the plane of the loop. They are in the plane of the loop, that you have to remember. So that's one possibility. So you can treat this as if current is flowing continuously in a circular loop. Understood? So for such kind of situations, we can virtually assume that there is a current flowing in a circular loop. Now here you can see that current is flowing in the clockwise direction, and you wish to find out the magnetic field at the center, that is point P. So every current element dl is tangential and every position vector is radially inward. So what will be the angle between the two? They are right angles.
They are at right angles, right? Position vector and the current element dl vector, they are always at right angles. So the angle theta is 90 degrees. Sin theta will be 1. Magnetic field due to this dl cross r, if you calculate, the direction will be into the plane of the paper. Okay, you can use right hand thumb rule. Okay, so dl cross r will be into the plane, and for all the elements dl, the magnetic field at the center will be into the plane. dl cross r is same for everything, all elements. तुम कहीं पे भी एलिमेंट लोगे, हर एलिमेंट का देखो, ये एलिमेंट लिया तुमने dl, तो इसका पोजीशन वेक्टर इधर है, तो dl क्रॉस r कैलकुलेट करोगे, इट इज क्रॉस. यहाँ पे लोगे dl, ये है पोजीशन वेक्टर r, फाइंड dl क्रॉस r, it is cross. So for all the elements, magnetic field is always into the plane of the paper. Is it clear? So what is magnetic field? According to Biot-Savart law, mu naught I dl cross r, magnitude is dl r sin 90. नीचे r cube है, so that r and cube that will cancel out, it will become r square. So mu naught I upon 4 pi r square is the magnetic field at the center, and dl. Now all the elements have the same magnitude, same direction. You just need to integrate. So when you integrate, you have to integrate dl. And what is the limit of dl? 0 to 2 pi r. Right? The total circumferential length of a circle will be 2 pi r. So your final result will be mu naught I upon 2r. ठीक है, लिख लीजिए इसे.
लिख लिया सबने? लिख लिया सर। ओके, ठीक है। अब देखो, दिस इज ऑल्सो राइट हैंड थंब रूल, बट इट इज स्लाइटली डिफरेंट in terms of the direction of current and the direction of magnetic field. So if you wish to find out the direction of magnetic field at the center of a current carrying loop, so what you have to do is you have to take your right hand, curl your fingers in the direction of current. This is the difference. पहले क्या था? Thumb के direction में current था. Now in the case of loop, you have to curl your fingers in the direction of flow of current. The direction of thumb will give you the direction of magnetic field. Okay? ये बात समझ में आ गई? This is known as right hand thumb rule. Now, if you wish to find out the magnetic field at a point on the axis of a current carrying loop, as shown here, then you need to take current elements along the periphery. So in this case, okay, no need to draw this diagram now. Just see, this ds is the current element which is tangential. Okay. You wish to find out its magnetic field at point P. Okay. Position vector is, you can see here, this is the position vector. Okay, so this position vector will make an angle of 90 degree. तो अगर तुम ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? टेंजेंट का और पोजीशन वेक्टर का होगा. तो एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट and position vector is 90 degrees. Don't confuse with this theta. This theta is something different. Okay, the angle between the tangent and the position vector will be right angles. ठीक है, आई होप आप ये विजुलाइज कर पा रहे हैं. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इट. तो डी एल या डी एस एंड आर का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी, डी बी. राइट, नाउ दिस डी बी कैन बी resolved into two mutually perpendicular components. One component is along the axis and the other one is perpendicular to the axis. Right? Now every element will have same magnitude of dB, but directions will be different. ठीक है ना? अगर आप देखिए यहाँ पे अगर आप नीचे लेंगे करंट एलिमेंट, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी. इट विल बी इन अ प्लेन, सेम प्लेन, डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ. तो ये पूरा का पूरा सेम प्लेन नहीं है, ठीक है, बट इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी. ठीक है ना? अब उसका जो ये कंपोनेंट होगा वो तो एड अप हो जाएगा, बट ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा. ठीक है, so every current element on the periphery will have a corresponding current element diametrically opposite, and those components, if resolved in the direction perpendicular to the axis, will cancel out, and along the axis components will add up. So basically total magnetic field will be only
along the axis. There will be no component perpendicular to the axis for the entire loop. I hope you can visualize this. ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो अभी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कैसे करना है. सर हाँ बेटा. सर मुझे वो डाउट था कि जो आपने राइट हैंड थंब रूल बताया कि पहले थंब को करंट की पोजीशन पे रखना है फिर मैग्नेटिक फील्ड पे, ऐसा क्यों रखना, वो समझ नहीं आया. अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड की यूजिंग सम सिंपल रूल, तो आपको इसको फॉलो करना है. इट वर्क्स. तुम इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ सर, इसमें पहले आपने थंब की जगह पे आई रखा, फिर मैग्नेटिक फील्ड रखा. ऐसा नहीं है. इफ the point is you want to solve the problem or not, first thing, yes, I want to solve the problem. I want to find out magnetic field due to a current carrying wire. So one way is to apply dl cross r and then find the direction. That will give you the correct result. Okay, but the shortcut to finding the direction is using the right hand thumb rule. It's a rule. If you want to use it, it will make your life simple. So if you take current in the direction of thumb, then the curling of fingers will give you the direction of magnetic field because of that thing. तो अगर तुमको किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो तुम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो इजीली. इफ यू डोंट वांट अ इजी मेथड, गो फॉर सम डिफिकल्ट मेथड. नहीं सर, आपने उसमें बताया था कि थंब के जगह पे मैग्नेटिक फील्ड रखना है. किधर? वो दूसरे वाले में तो वो दूसरा रूल है ना, वो दूसरा रूल है. दैट इज फॉर करंट कैरिंग लूप. तो सर लेकिन हम लोग करंट जो फ्लो हो रहा है, अगर हम उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर सकते? कैसे करोगे यार? यू आर नॉट सपोज टू फाइंड आउट ओनली फॉर दैट करंट एलिमेंट. तुम अगर सिर्फ इस करंट एलिमेंट के लिए निकालना चाहते हो dl क्रॉस r, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन. पर तुमको तो पूरे करंट कैरिंग लूप के लिए निकालना है ना. अगर तुम देखो इसके लिए निकालोगे, ये dl का डायरेक्शन है, ये r का डायरेक्शन है, तो ये तुम्हारा db का डायरेक्शन आ गया है, विच इज क्रॉस. बट आर दे आस्किंग यू ओनली अबाउट दिस करंट एलिमेंट? इस करंट एलिमेंट का भी तो निकालना है, इस करंट एलिमेंट का भी निकालना है, इस करंट एलिमेंट का भी निकालना है. हाँ सर. तो वो सारे करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस ही आता है. It basically means that if I curl my finger, now this is a new right hand thumb rule which is specified for a current carrying loop. Don't confuse it with the other one. The previous right hand thumb rule works for an infinitely long straight conducting wire. Here it is for a circular loop. So the rule says that if you curl your fingers of the right hand in the direction of the current,
then the direction of thumb will point in the direction of magnetic field at the center. So if you wish to find out, अगर मैं तुमको बोलूँ कि यहाँ पे let us say एक current carrying loop है, ठीक है, ये current carrying loop है. Now tell me what is the direction of magnetic field? Can you tell me? No sir. But if I tell you the direction, let us say मैंने दे दिया ये current का direction है. This is the direction of current. Now can you tell me? Yes sir. Yes. Just curl your fingers of the right hand in the direction of current. अभी कर लो practice. So thumb will be out of the plane of this screen. That means center पे magnetic field क्या आएगी? Dot या cross? Sir dot. बस. So basically you are trying to find out magnetic field using a right hand thumb rule, rather than actually doing DL cross R. It will save your time in the exam. Okay, ये सबको समझ में आ गया, ये ड्रॉ कर लिए. Now we are doing the derivation of, okay, so we are running out of time. तो ये derivation हम लोग next class में करेंगे, ठीक है ना? And today's doubt class is at 4 PM. आपको मैसेज आ गया कि नहीं आया?